and he failed miserably in that World Cup final. Let's focus on it. Yeah. Let's focus on the real things. But not now, but we will discuss, because I saw one of the documentaries and I even went and saw that gentleman, Collis King. We will also like to talk about such cricketers, those who became enigmatic because of many other distractions in life. And I think probably Collis King was one of the finer all-rounders from West Indies. I wouldn't say he was the fine. No, He bowled a little seam up and wasn't that consistent with the bat. Okay. But when he got going, he's one of his individuals. See ball, hit ball. And in that particular final in itself, I can remember. He got about 85, yeah. You know, I was waiting for someone to actually give me some sort of security that everything was going to be all right. And Collis just came and smacked it to all parts of the ground, which was a great relief to me. When he got out, I think he got out in the 80s. Then after, I would have seen so much. I think it was a bit of teamwork between him and myself. There wasn't any competition or anything like that against one another. But just to continue the job, which he would have tried and finish the job that he would have started. But it was a magnificent knocky play. He just hit it to all parts of the ground, which was of great relief for me at the other end. Yeah, and we will not forget that last ball flick over fine leg for us. Just short boundary again. A short boundary. Okay. So if you could see the Bangladesh, if you could see the Bangladesh squad. So we have Mahmudullah, the captain, and Shoaib Sarkar, who played the first match in the qualifiers and then was replaced by Mohammad Naeem Sheikh, who is in good form. Shakib Al Hasan, world's finest T20 all-rounder. Afif Hussain, Mahdi Hassan Miras, Mohammad Saifuddin, Mushfiqur Rahim. He's been replaced. Mohammad Saifuddin has been replaced by Rubul Hussain. Okay. He's got a back injury. Okay, so Azhar Mahmood will not like this because he loves Mohammad Saifuddin. I'm surprised that Rubel is always a better bowler than Saifuddin or anyone else. So he's now should be. So he's now back. He's first now back. Yeah, he's now back. Yeah. And we have Nurul Hassan. So now they got the same sort of bowling attack which hurt England in 2015 in Australia. Oh, David, this is Tashkent, Rubel. Can I just say, in response, that those instances of pain and embarrassment to England are what drive someone like Owen Morgan forward. I mean, he was, again, talking about transformation, what Viv was talking about earlier. Owen Morgan was given that World Cup side in 2015. Wasn't his side. He was installed as captain at the last moment. They had a terrible time. He vowed to change that. And he has. So for the last 6-7 years now, he has built a 50-over side and now a 20-over side. He's built a culture which works and which will be tested today. I mean, this is the thing. One thing I thought of earlier, he will not take anything for granted. Any stage of this tournament, however good that side looks on paper, he will have that message loud and clear to his players every day, today especially. You take nothing for granted. And we saw that in the first match also, the way they were looking at the run rate from the first match, even though they were winning comfortably, but they changed the batting orders in order that they finished the match well. So I second that. So there's no doubt. I mean, look, the way England transformed their white ball cricket since 2015, because look, T20 first few years, the board and they were not taking it seriously. They were not taking seriously, but now they realize how important it is. And it's commercial importance. It's a proper cricket, isn't it? Where I think they didn't quite take it seriously when we started in 1978 in Australia World Series cricket. Because even the coloured gear, they were rather reluctant to put on. They all came out in their whites. I never ever forget that. It was Mike Braley who was the captain at the time. But then, as you can see, the coloured gear brings money. You know, the whole transition in terms of what took place with the white ball. England sort of buying into it in a very big way. And as you can see what's happening in England now, the 100 ball, the colours and all that stuff. Even the T10. I tell you, T10 is the toughest cricket. You got 6-ball challenge to a batsman. If you miss out even 2 ball, you're gone. And as batsman, you are nowhere.
it's so frustrating for the batsmen as well. That oh God, the challenge is the batter. The batter. They made us change batsmen to batter. Okay. I don't think it's law anyway. When did it? Just remember the white ball and coloured clothing. Recently. Coloured clothing was a happy accident, and a very good accident, because of the subsequent commercial benefit. Because you couldn't see the white ball against a white clothing. So it was coincidental, basically. So someone said, "Okay, well, we need to give them coloured clothing." You guys didn't like the coral pink, I don't think, particularly. I'll tell you, it was nasty pink. It was a nasty pink. Because I'll never ever forget that too, David. You know what the Aussie crowd can be like. Yeah. And no one, even Clive, who was captain, never wanted to walk out first. Guys were pushing one another. And as we set foot on the field, I can remember you could hear the whistles, the cat calls, and all that sort of stuff. You felt rather funny. Soon we had to change that. Yeah. Because it was the most shocking pink that you can ever imagine. It's the colour of life. David, no, he hasn't got pink. Not today. I've got red socks, blue trousers, white shirt, red, white and blue. We're good. We're England. Multicoloured. Well, England colours. England colours. It's just the same about the players. Do you see any, because what we have seen of Bangladesh, whenever they are pitted against the better teams and they're up for a challenge, they tend to lift their game. So you're thinking that today is the occasion where we can see Shakib Al Hasan and Mushfiqur Rahim and Mahmudullah coming to the party? Of course, they will have to lift their game if they have to fight a very formidable England side. What surprised me in the last match that Shakib Al Hasan didn't bowl all his overs, even though they were short. I mean, the match was really close between them and Sri Lanka. So I think the quality of captaincy will have to be much, much better. Yeah, it has to be better. The best batters need to play most deliveries, and the bowlers need to be utilized well, because I think with such a close match against Sri Lanka, Shakib bowling just 3 overs, not having bowled the 4th over, that would have definitely impacted some of it. So do you want to say something quickly on Namibia and Scotland? Namibia, Scotland we seen the other day. Yeah. Namibia, I know only few players. Yeah. David Wiese. Yeah. And he's got the ability to change the game by himself. So you think that Namibia and England and Bangladesh, since they are playing in Abu Dhabi, the pitches will be different, and I think that pitch will suit England. Okay. So wait, any word on Namibia and Scotland? Well, it's the two teams, you know, who are basically fighting to be with the big boys. Yeah. So it's going to be a good encounter. Yeah. You know, it should be a very competitive match. The two teams are of the same standards of where they would have come from to where they're at now. Yeah. So it should be pretty much a very probably Scotland match. More organized, coming from a more organized structure. Namibia is evolving. Probably. Yeah. But the context is that both of them have come through the qualifying. They've arrived at the main part of this World T20. They want to be the side, each one of them wants to be the side not embarrassed most, granted they are likely to lose to everyone else. So this is their championship. Mm-hmm. Yeah. This, in effect, is their final. This is their championship. That's a good call. Thank you very much, David. So nice of you, Sir Vivian. And of course, it's always a pleasure. You would like to continue in the Urdu part, or you are a little skeptical after yesterday? No, I'll do that. Okay. Thank you very much, Anna. Thank you. It's always a pleasure. Game on, and we'll be right back with our Urdu panel. फैसल इस्लामी से मिले महफूज तरीन और तेज तरीन रेमिटेंस जैसी मयारी सर्विसेज। फैसल इस्लामी बैंक से बड़े मेरी परवाज आसमानों तक। गोल्डन फ्यूजी गैस और इलेक्ट्रिक गीजर, घर संवारे, प्रोडक्ट्स हमारे। और इस मोहब्बत को हमेशा अपने अंदर कायम रखना, इसी का नाम तो सूफी है। सूफी जो नाम है एतमाद का।
नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत प्लस मॉइस्चराइजर्स दे स्किन केयर। बड़े ख्वाब बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय। Hilal Fresher, now new and fresher. पाकिस्तान में पहली बार हिलाल लाया केक रस मिनी। एक बाइट में सारा मजा। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion, Aloe Vera Gel और Vitamin B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion। यूफोन 4G की नई वीकली हेवी इंटरनेट ऑफर, जिसके आगे सब लगे हल्का। मिले पूरे हफ्ते के लिए 14 GB इंटरनेट। अभी *270# मिलाओ। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। जब सॉफ्ट स्मूथ बटर थिक लशियस कैरमल में मिले, नो वंडर कैंडीलैंड बटर स्कॉच का मजा नॉन स्टॉप चले। ₹2 में इतना मजा, कैंडीलैंड बटर स्कॉच चलती जाए। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत प्लस मॉइस्चराइजर्स दे स्किन केयर। बड़े ख्वाब बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय। Hilal Fresher, now new and fresher. पाकिस्तान में पहली बार हिलाल लाया केक रस मिनी। एक बाइट में सारा मजा। गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। Introducing Nestle Fruta Vitals, sparkling fruit drink, a delightful fusion of soda and fruit juice. डाइव करने के लिए बॉलिंग स्टाइल ही बदल दिया, पर क्या बन पाएंगे ये सर्फ एक्सेल दागों के चैंपियन? Now that's a catch. पाओ ₹100 का फ्री वाउचर, इजी पैसा ऐप साइन अप करके। So go on, score 100 now. बाल संभालेंगे चांद से, शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन 5 नेचुरल ऑयल्स, जैतून के तेल के साथ गर्मी हो या पसीना, जो दे आपके बालों को up to 24 hours shine. How's that? पाओ ₹100 का फ्री वाउचर, इजी पैसा ऐप साइन अप करके। Go on, score 100 now. नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत प्लस मॉइस्चराइजर्स दे स्किन केयर। बड़े ख्वाब बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय। नई स्वेवी का न्यू फ्लेमिंग हॉट, जिसके एक एक रिज में है इंटेंस स्पाइसी फ्लेवर। ये है हर चिप से ज्यादा हॉट। जब सॉफ्ट स्मूथ बटर थिक लशियस कैरमल में मिले, नो वंडर कैंडीलैंड बटर स्कॉच का मजा नॉन स्टॉप चले। ₹2 में इतना मजा, कैंडीलैंड बटर स्कॉच चलती जाए। गोल्डन फ्यूजी गैस और इलेक्ट्रिक गीजर, घर संवारे, प्रोडक्ट्स हमारे। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक देता है कम आमदनी वाले अफराद को 20 लाख तक का कर्जा और 5 से 20 साल में आसान माहाना एक साथ के जरिए कर्ज वापसी की सहूलत। यू बैंक होम लोन, बुनियाद से तकमील तक। Try the new taste. Pepsi. नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सब सूखे दाग भी खींच निकाले। नया सर्फ एक्सेल, दागों का चैंपियन। अब गंदे होने की सबको इजाजत है। सूफी सुपर, सुपर एतमाद। MH1515 Bluetooth, repeat, delay and echo effects, 8 hours battery backup, HD wireless mics, trolley speaker, audio in and out, MH808 Bluetooth, repeat, delay and echo effects, 8 hours battery backup, HD wireless mic and speaker stand, trolley speaker, MH8 Plus Bluetooth, repeat, delay and echo effects, 8 hours battery backup, HD wired mic, trolley speaker.
Audionic, the sound master. मरहबा हनी, सेहत से जुड़ा कुदरती मजा। और इस मोहब्बत को हमेशा अपने अंदर कायम रखना, इसी का नाम तो सूफी है। सूफी जो नाम है एतमाद का। बाल संभालेंगे चांद से, शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन 5 नेचुरल ऑयल्स, जैतून के तेल के साथ, गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। जब सॉफ्ट स्मूथ बटर थिक लशियस कैरमल में मिले, नो वंडर कैंडीलैंड बटर स्कॉच का मजा नॉन स्टॉप चले। ₹2 में इतना मजा, कैंडीलैंड बटर स्कॉच चलती जाए। गोल्डन फ्यूजी गैस और इलेक्ट्रिक गीजर, घर संवारे, प्रोडक्ट्स हमारे। मचा दे धूम। MH 1515, Bluetooth, repeat, delay and echo effects, 8 hours battery backup, HD wireless mics, trolley speaker, audio in and out. Audionic, the sound master. Wear your attitude. Darren Sami by Oscar Ali. नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत प्लस मॉइस्चराइजर्स दे स्किन केयर। बड़े ख्वाब बड़ी हिफाजत, नया लाइफ बॉय। New Set and Touch Shampoo Plus Conditioners. The extraordinary touch, Set and Touch. यू माइक्रो फाइनेंस बैंक देता है कम आमदनी वाले अफराद को 20 लाख तक का कर्जा और 5 से 20 साल में आसान महाना एक साथ के जरिए कर्ज वापसी की सहूलत। यू बैंक होम लोन, बुनियाद से तकमील। इंतहाई शफाफ और मजबूत इमारती शीशा आपके घरों, दफातर और प्लाजों के लिए। तारिक फ्लोट ग्लास, अ कमिटमेंट टू क्वालिटी। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। नया सर्फ एक्सेल, दागों का चैंपियन। यूफोन 4G की नई वीकली हेवी इंटरनेट ऑफर, जिसके आगे सब लगे हल्का। मिले पूरे हफ्ते के लिए 14 GB इंटरनेट। अभी *270# मिलाओ। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। बाल संभालेंगे चांद से, शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन 5 नेचुरल ऑयल्स, जैतून के तेल के साथ, गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। डिलीशियस चॉकलेट और यमी कैरमल से बना गिगली 24, एक्चुअली कभी भी खा सकते हैं, कभी भी। तक का कर्जा और 5 से 20 साल में आसान महाना एक साथ के जरिए कर्ज वापसी की सहूलत। यू बैंक होम लोन, बुनियाद से तकमील। Hilal Fresher. Now new and fresher. पाकिस्तान में पहली बार हिलाल लाया केक रस मिनी। एक बाइट में सारा मजा। How's that? पाओ ₹100 का फ्री वाउचर, इजी पैसा ऐप साइन अप करके। Go on, score 100 now. डाइव करने के लिए बॉलिंग स्टाइल ही बदल दिया, पर क्या बन पाएंगे ये सर्फ एक्सेल दागों के चैंपियन? नई स्वेवी का न्यू फ्लेमिंग हॉट, जिसके एक एक रिज में है इंटेंस स्पाइसी फ्लेवर। ये है हर चिप से ज्यादा हॉट। बाल संभालेंगे चांद से, शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन 5 नेचुरल ऑयल्स, जैतून के तेल के साथ, गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। और इस मोहब्बत को हमेशा अपने अंदर कायम रखना, इसी का नाम तो सूफी है। सूफी जो नाम है एतमाद का। गोल्डन फ्यूजी गैस और इलेक्ट्रिक गीजर, घर संवारे, प्रोडक्ट्स हमारे। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत प्लस मॉइस्चराइजर्स दे स्किन केयर। बड़े ख्वाब बड़ी हिफाजत, नया लाइफ बॉय। Yes, now that's a real match. पाओ ₹100 का फ्री वाउचर, इजी पैसा ऐप साइन अप करके। So go on, score 100 now.
नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत प्लस मॉइस्चराइजर्स दे स्किन केयर। बड़े ख्वाब बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय। खालिस कुदरती अज्जा का 100% ओरिजिनल फॉर्मूला। इस जोशादे में जोश है। मरहबा। उजली धुलाइया वे, पावर शाइन ना लाइया वे। जब कपड़े लगे बिल्कुल न्यू, तो फिर दूसरा पाउडर क्यों? कमांडर पावर शाइन। जब सॉफ्ट स्मूथ बटर थिक लशियस कैरमल में मिले, नो वंडर कैंडीलैंड बटर स्कॉच का मजा नॉन स्टॉप चले। ₹2 में इतना मजा, कैंडीलैंड बटर स्कॉच चलती जाए। And here's my 100. पाओ ₹100 का फ्री वाउचर। इजी पैसा ऐप साइन अप करके। So go on, score 100 now. गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। डाइव करने के लिए बॉलिंग स्टाइल ही बदल दिया, पर क्या बन पाएंगे ये सर्फ एक्सेल दागों के चैंपियन? अंकल क्या कर रहे हैं? 24 खाने का टाइम आपको पता है? एक बार मेरे मामू ने गलत टाइम पे 24 खा ली थी, बकरा बन गए। नहीं। ओके। घड़ी में जब 8:08 हो तो ऐसे खाते हैं 24। क्या अंकल बन गए ना बकरा? डिलिशियस चॉकलेट और यमी कैरामल से बना गिगली 24 एक्चुअली कभी भी खा सकते हैं। गिगली 24 इंतहाई शफ्फाफ और मजबूत इमारती शीशा आपके घरों, दफातर और प्लाजों के लिए। तारिक फ्लोट ग्लास, अ कमिटमेंट टू क्वालिटी। Wear your attitude. Darren Sami by Oscar Ali. यूफोन 4G की नई वीकली हेवी इंटरनेट ऑफर, जिसके आगे सब लगे हल्का। मिले पूरे हफ्ते के लिए 14 GB इंटरनेट। अभी *270# मिलाओ। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। MH1515 Bluetooth, repeat, delay and echo effects, 8 hours battery backup, HD wireless mics, trolley speaker, audio in and out. MH808 Bluetooth, repeat, delay and echo effects, 8 hours battery backup, HD wireless mic and speaker stand, trolley speaker. MH8 Plus Bluetooth, repeat, delay and echo effects, 8 hours battery backup, HD wired mic, trolley speaker. Audionic, the sound master. Wear your attitude. Darren Sami by Oscar Ali. गोल्डन फ्यूजी गैस और इलेक्ट्रिक गीजर, घर संवारे, प्रोडक्ट्स हमारे। Try the new taste. Pepsi. और इस मोहब्बत को हमेशा अपने अंदर कायम रखना, इसी का नाम तो सूफी है। सूफी जो नाम है एतमाद का। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सब सूखे दाग भी खींच निकाले। नया सर्फ एक्सेल, दागों का चैंपियन। पाकिस्तान में पहली बार हिलाल लाया केक रस मिनी। एक बाइट में सारा मजा। Now bigger and softer. बाल संभालेंगे चांद से, शाइन भी करेंगे। Sunsilk Black Shine 5 नेचुरल ऑयल्स, जैतून के तेल के साथ, गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को up to 24 hours shine। यूफोन 4G की नई वीकली हेवी इंटरनेट ऑफर, जिसके आगे सब लगे हल्का। मिले पूरे हफ्ते के लिए 14 GB इंटरनेट। अभी *270# मिलाओ। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। अपना घर वही होता था जो हम कागज पे बनाया करते थे। अब ये देखे हमारा घर।
किराए का टाइम आ गया और तनख्वाह भी नहीं आई। आप फिक्र न करें, सब सही हो जाएगा। बाबा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी फिर हम अपना नया घर लेंगे। ना समझते पर वादे बड़े बड़े किया करते थे। जब बड़ी हुई और घर की जिम्मेदारी संभाली, याद आए वो वादे जब नजर अपने अम्मी अब्बू पे डाली। सॉरी अम्मी, आज एक्स्ट्रा क्लास थी। कोई बात नहीं, आओ इधर आओ। ये देखो क्या मिला, तुम्हारा बचपन का घर। इन्हीं वादों को पूरा करने के लिए मैंने यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के जरिए हुकूमत पाकिस्तान की हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडी स्कीम का फायदा उठाया, जो देता है कम आमदनी वाले अफराद को 20 लाख तक का कर्जा और 5 से 20 साल में आसान माहाना इकसात के जरिए कर्ज वापसी की सहूलत। यू बैंक होम लोन, बुनियाद से तकमील तक। India met Pakistan at Dubai. The atmosphere was filled with tentativeness. Pakistan hadn't beaten India ever before in the ICC World Cups. And there the two teams were, electric, nibble-footed. India star-cast a team packed with match winners. Pakistan needed to regroup. Babar Azam marshaled his resources after beating Virat Kohli on the spin of the coin. Short gone. Afridi wins his battle with Virat Kohli. Shaheen Shah Afridi spearheaded Pakistan's attack with all his aggression, picking up wicket of Rohit Sharma, their hitman. Outran KL Rahul, stumps and hopes shattered. Babar Azam with all his rigidity and class. Mohammad Rizwan with all his intrepidity and conviction. Didn't let a moment go. They sparkled, they dazzled, they conquered. A thumping 10-wicket win, a perfect start. We get a second here, they're charging back for the second. This could be the moment, this is the moment. And all of Pakistan will celebrate, as will these two young men out there. Game on hai. ICC World T20 2021 live on PTV Sports. To wish the Windies the very best. I'm here in Islamabad PTV studio. As you can see, the colors that I have on today is in support of my team. Once a maroon, always a maroon. Let's go, boys.
वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है और हमारा उर्दू का अब शो शुरू होता है जी। मेरे दाईं जानिब राइट साइड पे बैठे हैं पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, उमर गुल। गुल भाई ठीक ठाक हैं, खैरियत से? साहब कैसे ठीक हो? उम्मीद है कि आप सोशल मीडिया से इज्तनाब कर रहे होंगे आज। अभी थोड़ी देर पहले उठा हूं मैं। चलो, सोशल मीडिया से उसके बाद इसको नंबर नहीं दे रहा है।